Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, much better and happy Makar Sankranti to everyone. Much better, much better. Thank you. Good evening. We are now migrating to the last theme of governance, and then we should do a midpoint of governance and social justice and move to social justice thereafter. चलो ध्यान से देखते हैं कि कर क्या रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं. ठीक है. तो कहानी शुरू हुई सबसे पहले हमें समझने के लिए बेसिकली वी अंडरस्टूड अ लिटिल बिट ऑफ पॉलिटी. ठीक है. We understood in polity the various organs, agencies of the state and how do they function, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. Then we move to understanding the larger aspect of what is called corruption. So we looked at anti-corruption governance, right? Where we looked at laws, we looked at bodies, we looked at everything else. This was to inherently ensure that the bodies of the state are held accountable for what they do. So, polity is about understanding the instrumentalities of the state. Anti corruption governance is to ensure that they are functioning in a right manner. Then we also have to understand, are they working in an efficient manner? है ना? In a manner which is good, in a manner which is productive. So we now look at good governance, and in good governance, we look at largely transparency and accountability, e-governance, and citizens charter. Right. So basically, we look at citizens charter and e-governance. ये कहानी है. And all of this is largely under the framework of transparency and accountability. दो सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहां से लिंक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. और यहां से हम फिर कुछ सेक्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट हो गया, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जैसे रेगुलेटर्स हो गए, उस तरह से. तो फंडामेंटली हम तीन चार सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि देश कैसे चलता है, अच्छा कैसे चलता है और बेहतर कैसे हो सकता है. इफेक्टिवली यही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं. And then we understand that governance is never just about the state. So we then look at non-state actors, and then we look at certain developmental aspects. Social justice, education, health, poverty, etc. This is the general journey that we follow, which is easier to study. इस पूरे इकोसिस्टम को भी हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, जिसमें एंटी करप्शन गवर्नेंस, इसमें आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें सिटीजंस चार्टर और ई गवर्नेंस आता है, रेगुलेटरी गवर्नेंस, जिसमें हम कुछ सेक्टर्स भी साथ में करते हैं. इफेक्टिवली अबाउट मेकिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट वर्क बेटर. एक तो है टू मेक देम वर्क इन एन अपराइट मैनर, एंड टू इंश्योर दैट दे वर्क बेटर. बेसिक कहानी है. ठीक है. एंटी करप्शन गवर्नेंस इंक्लूडिंग लोकपाल सब खत्म हो गया. यस और नो भाई, यस और नो. ठीक. तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा और थोड़ा सा यहां पे भी जुड़ेगा. इट्स अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ हाउ वी रन थिंग्स. ठीक है. अब सिलेबस की लाइन देखते हैं. टुडे आफ्टर क्लास विल टेक अ स्टॉक ऑफ द सिलेबस आल्सो. सिलेबस क्या कहता है? Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance and its applications, models, successes, limitations, and potential. This is one aspect. And then you have citizens charter, which is an independent topic. Transparency and accountability and institutional and other measures. तो ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स से हम एंटी करप्शन गवर्नेंस निकालते हैं. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस को हम डेवलपमेंटल गवर्नेंस और मॉडल्स के साथ जोड़ते हैं. एंड
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और ई गवर्नेंस को हम साथ में करा के पढ़ते हैं, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, a topic like this cannot be done without understanding what our PYQs are, because here the PYQs are the syllabus to your topic, because the syllabus otherwise is a little broad. ई गवर्नेंस तक तो ठीक है, अब हमारी दिक्कत क्या आएगी कि हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस देखना है, यहां से भी थोड़े सेक्टर्स निकल आएंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को जोड़ के भी थोड़े से सेक्टर्स निकल आएंगे, थोड़े से एस्पेक्ट्स निकल आएंगे। तो किसको कितने हद तक फिट करना है, और यहां ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लिखा है और यहां ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अदर मेजर्स लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका? बेसिक फंडामेंटल एरर है। तो इसलिए पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है और समझना है कि पीवाईक्यू में पूछ क्या रहे हैं। सो इफेक्टिवली वी आर लुकिंग एट थ्री एस्पेक्ट्स कि स्टैंड अलोन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में क्या पूछा है, दूसरा ई गवर्नेंस में क्या पूछा है, और तीसरा सिटीजंस चार्टर में क्या पूछा है। क्या मैं इसको ऐसे रीऑर्गेनाइज कर सकता हूं? यस और नो? क्या इसको मैं ऐसे रीऑर्गेनाइज कर सकता हूं? गुड। और यहां से मैं फिर सेक्टर्स और थोड़े से रेगुलेटर्स अच्छे से पढ़ सकता हूं, which will also help me understand important aspects of governance. ठीक है, अब जरा एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? चल ये इवन बेटर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। 2025, one question from here on e-governance. E-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. अब इस सवाल पढ़ के थोड़ा सा हमको वियर्ड लगना चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, और जो ये एग्जामिन लिखा है इसका मतलब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। It is more about explaining why this is happening and what are the problems with this. इस क्वेश्चन से 2 मिनट 2 कदम पीछे जाओ। ये बेसिकली एक लाइन में तो यही कह रहा है ना कि हमारा ई गवर्नेंस यूजर फ्रेंडली नहीं है। सीधी सिंपल बात तो यही कह रहा है कि हमारा ई गवर्नेंस इफेक्टिवली यूजर फ्रेंडली नहीं है। सिंपल इज दैट, इट्स नॉट फंक्शनल इनफ। गुड। दूसरी बात क्या समझ में आई हमको, दैट दे हैव टेकन अ वेरी स्पेसिफिक इशू ऑफ ई गवर्नेंस एंड आस्क यू ऑन दैट स्पेसिफिक इशू। ई गवर्नेंस के बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया का प्रॉब्लम है, डिजिटल लिटरेसी का प्रॉब्लम है, एक्सेस टू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल फोन ही नहीं है, तो क्या ऐप आप खेलेंगे? हम तो यहां कह रहे हैं कि वो वेबसाइट और वो ऐप आसानी से यूज ही नहीं हो सकती, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। यही कह रहे हैं ना हम लोग, दिस इज व्हाट वी आर फंडामेंटली सेइंग, यस और नो? तो ये क्वेश्चन यूजर फ्रेंडलीनेस का है और ये क्वेश्चन स्पेसिफिसिटी का है। ठीक, समझ आ गया? Now in 2024 we have two questions and perhaps the only time when there are, एक बार 2018 में भी ऐसा होता है कि very few times you will see two questions from here. So 2025 here again, 2024 here again,
and 2024, द सिटीजन चार्टर कुछ नहीं है, सरकारी अमेजॉन प्राइम है कि हम आपको अपने डिलीवरेबल प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, अगर हमने आपको उस तरह की क्वालिटी उस टाइम पे नहीं दी तो हमारी तनख्वाह कटेगी। बस इट इज लाइक अ सेल्फ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ये समझ आ रहा है, ये क्लियर है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए सर्विस प्रोवाइडर। अब इसकी क्या टेक्निकलिटीज है मैं आपको आज सिटीजन स्टार्टर में पढ़ा, that the government is also a service provider। आपने अगर पासपोर्ट अप्लाई किया है और आपको पासपोर्ट अगर टाइम से नहीं मिलता या आपको टाइम से पासपोर्ट की अपडेट्स नहीं मिलती तो आपने उस पासपोर्ट के लिए पे किया है। अगर आपने उस पासपोर्ट के लिए पे किया है तो यू आर एंटाइटल्ड टू ए सर्विस व्हिच इज गुड इनफ इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये सवाल उसी पे है कि सरकार के पास अपने अपने चार्टर्स होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स के अपने अपने जिसको कह सकते हैं प्रोमिसेस होने चाहिए। सो द सिटीजंस चार्टर has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. Yet, it is to reach its full potential. So, identify the factors hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome. ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि क्यों बढ़िया है, क्या गैप्स हैं और इसको कैसे सॉल्व करें। ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वेश्चन है सिटीजन चार्टर का। यस और नो? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू इंप्लीमेंट इट प्रॉपर्ली? वेयर आर द इश्यूज, गैप्स, प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन वी मेक देम बेटर? तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि सिटीजन चार्टर में क्वेश्चंस रिलेटिवली हम देख रहे हैं शायद डायरेक्ट आ रहे हैं, बिकॉज ये एक आइसोलेटेड आइडिया है। अब 2024 का ई गवर्नेंस का क्वेश्चन देखो। E-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. अब ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 2024 के पहले बहुत कम लोगों ने इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल नहीं सुना होगा। करेक्ट? ठीक, कोई बात। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, कुछ ऐसी सी कोई यूनिक टर्म ले आए जो हमने कभी सुनी नहीं, लेकिन हम उसे ब्रेक डाउन तो कर सकते हैं, मुश्किल तो है नहीं। इस सवाल को सिंप्लीफाई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड मेक दिस क्वेश्चन योर ओन। कि ई गवर्नेंस का मतलब सिर्फ ऑनलाइन आपका स्टेटस या आपका ट्रैक होना कि अच्छा एप्लीकेशन कहां पहुंची या कुछ सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन इश्यू हो जाना, सिर्फ वही नहीं है ना। इट हैज टू बी समथिंग मोर। जब चीजें डिजिटल हो जाती हैं तो हर चीज का एक रिकॉर्ड रहता है, हर चीज का एक रिकॉर्ड रहता है। इस और अगर कोई चीज कहीं अटकी है तो हमें पता चल जाएगा कि कहां अटकी है और क्यों अटकी है। यस और नो? बेसिक फंडा तो यही है। If something is stuck somewhere, we will know exactly where it is stuck. And everybody has a defined time to clear whatever applications is pending before them as government officers. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर से पासपोर्ट का ही ले लेते हैं, मल्टीपल चेंज ऑफ अप्रूवल हो सकते हैं। कहीं पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। अगर मामला कहीं फंसा है तो क्यों फंसा है ये कौन कौन चेक कर सकता है? सीनियर ऑफिसर,
अटेंडिंग अफसर, जूनियर अफसर और जनता? यस और नो? अगर किसी स्टेज पे कोई फाइल अटकी है तो सुपरवाइजरी अफसर चेक कर सकता है, जो अटेंड कर रहा है उसके लिए रेड रेड फ्लैग है, जिसने वो फॉरवर्ड करी है उसको पता है, जहां जानी है उसको पता है कि भाई मेरे पास नहीं आएंगे फिर मेरा काम अटकेगा, और आपकी एप्लीकेशन आपको पता है. सो डज दैट फंडामेंटली आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज मल्टीफेरियस? ब्रेक कर रहे हैं ना हम. तो समझ में आ गया मल्टीफेरियस क्या है. एंड एज सैनी ऑल्सो सेड बिफोर, इंटरैक्टिव का क्या मतलब हुआ कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. अब ई गवर्नेंस में या तो गवर्नमेंट और बिजनेस है, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट टू सिटीजन है. तो इंटरेक्शन भी इन्हीं लोगों के बीच में होगा ना. कि मैंने आधार का एड्रेस अपडेट करने की एप्लीकेशन डाली, 2 महीने हो गए, तो मैं पता करूंगा ना कि कहां है एप्लीकेशन भाई. यस और नो? बस. सो दिस interactive could be anybody. Chatbot is Satvik, you are chatting with the agency ना. अब चैटबॉट अगर फॉर एग्जांपल चैटबॉट भी हो तो चैटबॉट में रैंडमली बात तो नहीं कर रहे ना और क्या चल रहा है. अब इंक्वायरी तो कर रहे हो कि मेरा स्टेटस क्या है. सो ऑल ऑफ दिस इज लार्जली अबाउट द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. It is the same thing that we will study in local self government. It is the same thing that we will study in that we have studied in RTI. RTI is nothing but participatory development. Correct? So you everything and anything that we know about participatory development or participatory governance has to now be applied to e-governance. But देखा जाए तो 25 और 24 की ई गवर्नेंस का सवाल पूछने का तरीका सेम है. सवाल पूछने का तरीका सेम है. दैट they have asked fundamentally a very specific question, and the statement of the 2024 question is one of the reasons why 25 is a problem. क्योंकि ई गवर्नेंस में आपने इतने चेक्स लगा रखे हैं, इतने आपने वॉचडॉग्स लगा रखे हैं कि इट हैज फंडामेंटली बिकम वेरी अनफ्रेंडली. राइट? Classic example, your UPSC application form. Very soon there is going to be a crash course on how to fill UPSC form. कोई ना कोई चंपू पक्का लेके आएगा. ठीक है? कोई ना कोई पक्का लेके आएगा कि देखो कितना प्रॉब्लम है, मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्म कैसे भरते. फंडामेंटल इशू. सात्विक, वन मस्ट नॉट कमेंट ऑन अनदर इंडिविजुअल. जो उनको ठीक लग रहा है वो अपनी जगह सही है, दुनिया अपनी जगह सही है. वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स थॉट. ठीक है? ये हम ध्यान रखेंगे सात्विक. ठीक है? गुड. आर वी ओके विद दिस? ओके, गुड. नाउ 2023 एक चीज और क्लियर होगी. 23, 24, 25 e-governance has been regular 3 years in a row. 3 years in a row. Citizens charter is rare asked. Definitely never asked one after the other year. ठीक है? Okay. Now look at the 23 question.
ई-गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस, ये शब्द हम बहुत बार नहीं पढ़ पाते. एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस has ushered in effectiveness, transparency, and accountability. They've linked it to the syllabus in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? These features माने effectiveness, transparency, and accountability. सवाल में ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है. Right? Just give me 1 second. This is important. Sorry. Now, this is a question on e-governance and a larger question on e-governance. है कि नहीं? Effectiveness, transparency and accountability. तो सवाल ये है कि ई-गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने में क्या दिक्कत हो रही है, ई-गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने में क्या दिक्कत हो रही है, और ई-गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट्स में लाने में क्या दिक्कत हो रही है. यही इशू है ना? करेक्ट और नॉट? If you look at this question carefully, there are two parts to this. E-governance will bring in effectiveness, transparency, and accountability. In a line, we explain how. And then we say how, again, it has not reached its full potential. So this is a larger question. और जो 2024-25 में पूछा है is actually a breakdown of the 2023 question. It is just a breakdown of the 2023 question. So this is a general question. Yes or no? Good. So if we have a larger answer ready with enough specificities or with enough details to each of the specificities, we should be able to answer the question. तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया कि हमको ई गवर्नेंस का एक ढांचा तैयार करना है और उस ढांचे के अंदर हम जितना इंसर्ट कर सके, जितना उसको हम इंट्रिकेट बना सके, दैट इज द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर ऑन ई गवर्नेंस. करेक्ट? ठीक है. Then look at 2022. Sorry. Then look at 2020. Which means from 2023 to 2025 questions. 2 years, 3 years, no questions. Now 2020, you have the last question.
the emergence of the fourth industrial revolution, digital revolution has initiated e-governance as an integral part of government. Now, this is the question when we are transitioning into e-governance. 2025 was 15 years of Digital India, 2015. Digital India picked up and we really were in the middle of a digital revolution. 2020 is also where things were hyper pushed online because of COVID. Remember 2020 is COVID year? So therefore, this is a question which is more contextual and more evolutionary in nature. Today, this question at the most can be an introduction in our answers. Can I cut, copy, paste and write this as an introduction in my answer on Digital India? कर सकता हूं ना? इससे बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन है मेरे हिसाब से तो. But are there chances of a question like this being asked again? No. क्योंकि अब वो ट्रांजिशन हो गया है. That is why means questions have to be also understood with some context. पढ़ने को तो पढ़ लें, evolution of digital India, evolution of e-governance, but एग्जाम में नहीं लिखोगे. एट द मोस्ट एक डायग्राम बना के छोड़ दोगे 15 नंबर की क्वेश्चन, एक टाइमलाइन बना के छोड़ दोगे, बट एक क्वेश्चन उसके एवोल्यूशन पे नहीं आएगा. इवन इफ इट्स एन एनिवर्सरी ईयर, दे विल आस्क यू क्या क्या हमने अचीव किया और क्या नहीं किया. And you can sense with terminologies also. Now look at the question in 2019. We understand how we are also adapting to it. Implementation of ICT based projects usually suffers from certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. How is this question any different from 2024? 2023? सिमिलर क्वेश्चन है ना. The answers to both of these questions are largely interchangeable. जो यहां इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, आप ये हेडिंग हटा के वो प्रॉब्लम अलग से लिख दो. Right? Surely. I'll address this after this. UPSC always has this outstanding ability to give you a hint. 2018. So this is the question which is again on e-governance, and it is a general question. Can we say so? It is a general question. Try to frame it specifically, but it is largely a general question. Similarly, 2018, e-governance is not only about utilization of the power of technology, but also about critical importance of the use value of information. We go back to specifics. Right?
Remember interactive model of governance, a new unheard term. So critical importance of the use value of information. What do you think it could mean? What is use value of information? ठीक है, सिंपल भाषा में. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यूज वैल्यू, इसको दोबारा पढ़ो. कल अगर कोई और क्रिटिकल टर्म आ गया, कोई और रैंडम टर्म आ गया, तो हमको घबराना नहीं है. कि ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी. गुड आनंद, थोड़ा सा और. बट उस टेक्नोलॉजी से आप क्या कर रहे हो? यू आर एबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन बियॉन्ड स्केल्स एंड बियॉन्ड लिमिटेशन. तो उस इंफॉर्मेशन का आप क्या कर रहे हो? यस, it has much to do about better utilization of new technology. ठीक है, something more specific. ठीक है, ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी. ठीक है, बट आप उस टेक्नोलॉजी से कर क्या रहे? टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस का क्या लेना देना? देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोसेसिंग. Isn't this question also about data driven governance? Effectively what this is about, right? ब्रेक डाउन, यूज वैल्यू क्या है, उस इंफॉर्मेशन का मेरा क्या काम. इसको एकदम देसी ठेठ तरीके से अप्लाई करके देखो. If today, yes, if today I am processing, I'm using the same example. If today I am processing all passport applications digitally, I should be able to know where my pain points are. I should be able to identify mostly where people are facing rejections or flags, right? Good. Exactly. Aadhaar based payment systems, direct benefit transfer, opening of Jan Dhan accounts electronically. Yes. Now, remember I said similarly 2018. Now come back to what I said. Now think about, is this really a specific question? No. You will write about it is effectively. अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ डज ई गवर्नेंस हेल्प इन गवर्नेंस? What is this question is simply advantages or impact or applications of e-governance. And they are very careful in using the term explain. Just tell us how. Clear? Then in 2018 again, the second time you have questions from both of them together. एक बार 24 में हुआ था और एक बार 2018. The Citizens Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability.
but it has its own limitations. Identify limitations and suggest measures for greater effectiveness of citizens charter. Exact same question as 2024. Isn't this question and this question the same? Correct. Now, the last few questions. 2018. In the Integrity Index of Transparency International, India stands very low, which means this is the data that we can use in our answers. Discuss the legal, political, economic, social, and cultural factors that have led to the decline of public morality in India. Now, if I cut, copy, paste this question in GS4, can you tell the difference between paper 2 and paper 4? Is this a question on the theory of corruption that we discussed when we studied anti-corruption governance? Simple. Haha. 2015. In light of the Satyam scandal of 2009, discuss the changes brought in corporate governance to ensure, what are the words? Transparency and accountability. And they've applied these two words where? In corporate governance. Yes or no? And in the prelims, they've asked corporate social responsibility last year. So the misconception that governance is only a main subject is absolutely blasphemous. Absolutely. It burns my blood when people say governance and social justice is mains exam. In the prelims, have you not seen a question on RTE Act? Have you not seen a question on UNCLOS? Have you not seen a question on CSR? Then, so here you're seeing transparency and accountability because, as such, think about it. In the exact last 10 years, एक बार भी पूछा what do you mean by transparency accountability? एक बार भी पूछा कि अच्छा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्या एस्पेक्ट्स है क्या डायमेंशंस हैं? Did you see even a single question on aspects of governance? No. वो थ्योरी उधर है. Which is why इसके साथ the best thing to do is study the parallel parts in GS paper 4. Yes or no?
You can write GS4 information here also, and you can write information from GS2 and GS4 also. That is why they're conjoined. And that is why you see questions like in 2013, when pilot projects were being launched, electronic cash transfer system is nothing but DBT today. For welfare schemes is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage, and facilitate reforms, taking it to sectors and development models based on the principle of transparency and accountability, which is why you cannot study governance in isolation. And then finally, in 2013, those citizens' charters have been formulated by many public delivery organizations. There is no correspondent improvement in the level of satisfaction and quality of services being provided. Here, they've given you the points for issues, and you have to just expand them. Right or wrong? Good. So, what are our key insights from this topic? One, e-governance is the most important topic. Here you have to create a general and a specific answer. Correct? Which specific they have already asked, whether it's user friendly or not. Yes, they've asked about the interactive service model, and you see the moving from general to specific. Yes, and let us say a combination of both, but use value. So this has to be prepared irrespective every means. Then you have citizens charter, which has to be prepared at least alternatively, but in a very general manner. So here you can drive excellence through good content, through good information. Yes, but I have to largely prepare general. Now, citizens charter was last asked in 2024, not asked in 2025. So to be on the safer side, we can prepare it for 2026. Now, all of you have seen my MCN notes for 2025, which we are also using parallelly, right? Did I do citizen starter for mains 2025? Nope. Do you now understand why? Good. Having said that, isn't citizens charter common to paper 4? So while GS2 may look at it alternatively, we should still prepare it for paper 4. We might be able to use it here or there somewhere.
And then we take 2 steps back, look at transparency and accountability in the context of good governance, and think of as many dimensions. What is the meaning of it? This is important for paper 4. Yes, simple. Then we look at why our system suffers from transparency and accountability. Then where are we lacking? Yes. What happens where there is a lack of transparency and accountability? And how do you generally solve for it? This is your ARC, committees, etc., etc. This is enough common for paper 2 and paper 4. The larger aspect of it. This is very simple. Break it into organs of state. Break organs of state into permanent executive, elected executive, judiciary into higher judiciary and subordinate judiciary. Day after. Day after. Just busy tomorrow with a lot of work. Day after. Correct? Simple as this. And then we look at applications. We look at sectors and regulators. Right? Then we look at beyond government. So corporate governance. We look at non-state actors, which combines with developmental models. And somewhere in the middle, which we've already covered, is anti-corruption governance, which is nothing but enforcing transparency and accountability. Yes or no? So you have to play in the same universe. Okay? Okay? Good. So this, are we now okay with the approach? Do we now generally understand क्या करना है, कैसे करना है? %100%. Good. So ready for 9 a.m. tomorrow? Now we can put it all together and brainstorm and get it right. There are so many factors put in. Make sense? Done. No, Satvik, I didn't. I will not. I had to cancel in the morning and take it at 9 just because there was generally something stuck up. We will have a class at 9. Don't worry. Okay? I can teach now also if you want. I'm okay with it. But I thought we can sit for longer. You guys can. I know we've kept 9, so that's why I know a lot of you have started to sleep early because of correcting your patterns. That is why.
9 a.m. Okay, Satvik? Is that fine with you? Yes? Good. Done. I will. If possible, before class tomorrow, if possible, just to put things in perspective. Think of e-governance in as many ways as possible. Can I take 5 minutes and just generally discuss this? If I have to look at e-governance, answers to e-governance, just 5 minutes if that's okay. Anything and everything that we can think of. One can be a stage-wise approach, which is policy formulation, implementation, evaluation. Yes or no? Second can be a component approach or a stakeholder approach. Government, business, citizen, non-state actor. Yes or no? This can be one approach. One can be a purpose approach. Why do you need it for? What is the process of it? Why would you want something e-governance? Why would you have technology? It could be for service delivery. It could be for welfare. It could be for better office management. Yes, correct. Largely. Why are you using technology? What is the point of it? Which is nothing but efficiency, effectiveness, transparency, accountability. We can think of it in terms of what are the larger impact themes that you want to create. Like making things effective, more transparent, and accountable. Would that be correct? Yes or no? Excellent. Simple. If I just do a permutation and combination of these 4, 5 approaches, I should be able to write all answers on e-governance. Isn't that the case? Think of it. If I'm able to generally look at a combination of this, I should be able to solve most questions on e-governance.
And generally, e-governance would also have some stand-alone thematic obstacles, which are largely two kinds. One, infrastructural, and second would be adaptability. Yes or no? Now, do we understand the way we should approach e-governance? Think of every question that we have discussed today. Are we able to map it across this? This is the point of class. Everything is understood in a certain way. So e-governance has a it's a user-friendly problem. So user-friendly problem would be here, which would also impact policy, which would impact purpose. So what is the user-friendly problem? What does it impact? What does it ultimately lead to? And what is the larger consequence? Right? Interactive model, basically permutations and combinations of these, so that you can make better policies, so that you are solving better purposes, so that there are better impact themes, so that you're able to solve obstacles better. Right? Put all of this together is your general answer on e-governance. Use value of information. Use value of information. What are you going to use that information for? Where are you getting that information from? Can you specifically use it to make something better? Technically, purpose and implementation are related. Purpose is nothing but a subset of implementation. Can you use that information to make things more effective, transparent, and accountable? And use that information to solve infrastructural and adaptability issues largely? Yes or no? Good. Break things down, write what comes naturally to you, develop a critical way to think, develop a very simple structured approach. Templates and forcing yourself to adapt to templates is not going to work. The idea is break each of these into as many smaller points and you'll have a better answer. Isn't that what is working? सीधी बात है, ई गवर्नेंस क्या है जी? गवर्नमेंट और बाकी सबका इंटरेक्शन डिजिटल हो रहा है, तो गवर्नमेंट बाकी सब डिजिटल, यही तीन चीजें होगी ना. These are the three basic aspects: government, digital, and everything else, and how they are related to each other. Good. So let's pick this up. You just send me an email, Shubham. I'll have a look. ठीक है? चलो, see you in the morning. Bye bye.
I'll have a look, Nishima. I've not checked. I'll see. Okay, thank you. Bye-bye.